Hey everyone, welcome to Educated Himalaya. Now this is a new lecture series in which I'll try to break down every chapter into multiple choice question and help you to get better at understanding these chapters. Now why do we need to study MCQs? Now first is it will help you to rewind the chapter. आपको easily एक highlights मिल जाएगी जो आपने बहुत पहले पढ़ा था या recently पढ़ा है. You'll know कि आपको कितना याद है. The second thing is how questions can come in exam from this particular topics. तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के questions frame होते हैं इस particular chapter से या इस topic से. The third thing is which things are there to remember. Now one thing that is very important about studies is that you need to know कि what's there to remember. You cannot mug all the facts. So आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या याद करना है. The third thing is better understanding. So MCQ आपको break down करने में help करेंगे कि better understanding क्या है topic की, कौन सी चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती है, इस तरह की चीज़ें. तो do one thing. After these MCQs are finished, you'll go back to the book and try to read it again and try to clarify what's there in your head or not. And the first question is the drainage pattern found by North Indian rivers is trellis, option B dendritic, C rectangular and radial. Now you need to understand कि North Indian river किस तरह का nature है और किस तरह की वहाँ की topography है. Now first option trellis. ट्रेलिस में क्या होता है? पैरेलल फ्लो करती है रिवर जहाँ पर सॉफ्ट रॉक और हार्ड रॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है. वैसी जगहों पे ट्रेलिस जो फॉर्म करती है रिवर उस तरह का. तो राइट एंगल पे रिवर मिल जाती है ट्रिब्यूटरीज उसकी और उसके बाद ये फ्लो करना शुरू कर देती है. तो डेंड्रिटिक जो ब्रांच है वो इस तरह से है कि ट्री की ब्रांचेस की तरह उसकी फॉर्मेशन होती है. तो इफ यू सी मेजॉरिटी ऑफ नदर्न रिवर्स का क्या है कि वो हिमालय से निकलती है. अब हिमालयस में किस तरह की फॉर्मेशन होने के चांसेस है? डेंड्रिटिक, क्योंकि ये रिजेंबल करती है ट्री की ब्रांचेस की तरह. सो आंसर हियर इज कि विदाउट लुकिंग फर्दर रेक्टेंगुलर रेडियल इज कि एक माउंटेन पीक से चारों तरफ से आ जाती है. रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है ड्रेनेज, बट हियर आंसर इज dendritic. So this is the answer here. Now I'll move to the next question. The answer is dendritic. Next question is which of the following is the feature of Himalayan rivers? तो Himalayan rivers इनमें से क्या define करती है Himalayan rivers को? So option A is most of them are perennial. Perennial का मतलब है कि उसमें सारा साल पानी होता है. तो the answer is yes. हिमालय की rivers जो है वो perennial होती है क्योंकि स्नो बाउंड माउंटेन्स होते हैं और सारा साल उसको पानी देते हैं. द फर्स्ट थिंग इज राइट. द सेकेंड रिसीव्स वाटर फ्रॉम मेल्टिंग स्नो ओनली. हाँ, स्नो से मिलता है, यस, बट आई विल कम बैक टू दिस ऑप्शन. द थर्ड वन इज हैव लॉन्ग कोर्सेज. यस, हिमालय से जितनी भी नदियां निकलती हैं उनके कोर्सेज बहुत लंबे हैं. जैसे ब्रह्मपुत्र इज द एग्जाम्पल, इंडस इज द एग्जाम्पल, गंगा इज द एग्जाम्पल, Yamuna can be the example. They carry huge load of silt and sand. Now we know the great North Indian plains जो है they are formed by these Himalayan rivers क्योंकि वो बहुत सारा silt और sand लेती है जिसकी वजह से alluvial form बहुत ज़्यादा alluvial जो soil है वो बहुत ज़्यादा deposit हो जाती है North Indian plains में. So this option is also right, but I have a doubt about the option B. Why? Because receive water from melting snow only. It is wrong. Yes, snow से उसको बहुत सारा water मिलता है, but it is not only the snow. Snow only isn't there. So why? Melting of snow only is not. Monsoon से भी उसको बहुत सारा मिलता है. So my answer would be A, C and D. So this is my answer. Let's move to the further. Which of the following is tributary of Indus? Now we know about Indus. Indus rises in Tibet near Ladakh, near from Mansarovar Lake. It flows west and enters the Ladakh district of Jammu and Kashmir. Now here the tributaries are Zaskar, Nubra, Shyok. The other one is Hunza as well. Now Kabul is a very important right bank tributary of Indus as well. हाँ, ये river India से नहीं निकलती है, but still it is the right answer. So the right answer here would be all of the above. Consider the following statement. So this is the fourth MCQ. Most of Himalayan rivers are perennial. Yes, most of Himalayan rivers are perennial. Indus and Brahmputra cut through mountain making gorges.
सो बहुत गहरी जो खाइयाँ हैं क्या इंडस और ब्रह्मपुत्र बनाती है. सो दिस इज अ क्वालिटी ऑफ हिमालयन रिवर्स कि जितनी भी है वो बहुत ज़्यादा फ्लो उसका हाई है, बहुत ज़्यादा इरोड करती है अपने आसपास की जगहों को. सो यस, हिमालय की रिवर्स सब की सब डीप गॉर्जेस बनाती है. दीज रिवर्स रिसीव वाटर फ्रॉम रेन एज वेल एज फ्रॉम मेल्टेड स्नो फ्रॉम लॉफ्टी माउंटेन. यस, माउंटेन मेल्टिंग ऑफ स्नो से मिलती है और दूसरी रेन से भी मिलती है. द आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र. नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलती है. विल ट्राई टू रिमेंबर दैट. उसके बाद यूल सी कि ईस्ट में जाती है, तिब्बत में फ्लो करती है ईस्टर्न साइड में. उसके बाद एक नमचाबरो नाम की पीक है, वहां से यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है. तो देयर इट इज नोन एज दिहांग. उसके बाद इट फ्लोज थ्रू द असम वैली फॉर अबाउट 750 किलोमीटर्स. तो वहाँ इन जो इंडिया का एरिया है वहाँ पर कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज इसको मिलती है. वन इज दिबांग. यस, दिबांग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ Brahmaputra. Subansiri, yes. Lohit, Dhanshri. So all of them are tributaries of Brahmaputra river. The answer is all of the above. Now let's move further. Choose the tributaries of Godavari. Now Godavari is very important peninsular river. Godavari बहुत important है. तो उसकी जितनी भी tributaries है we'll try to understand. तो Godavari is one of the largest rivers from peninsular India. तो इसकी जो ट्रिब्यूटरीज ऑप्शन इज पूर्णा, वारधा, प्राणहिता, दक्षिण गंगा एंड मंजरा. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. पूर्णा, वी नो पूर्णा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी. वारधा is yes. Pranhita, yes. The fifth one, Manjra, is also. I'm not sure about Dakshin Ganga. Now let us try to understand Dakshin Ganga. तो ये हुआ कि दक्षिण गंगा किसका नाम है. गोदावरी is also known as दक्षिण गंगा, बट क्या ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है? नो. द आंसर इज इट इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी बिकॉज इट इज इटसेल्फ इज दक्षिण गंगा. सो आंसर हियर वुड बी 1, 2, 3 and 5. So answer is, let's check the answer. Yes, answer is 1, 2, 3 and 5. Seventh question, which of the following rises in Brahmgiri ranges? Now the first answer is Narmada. Narmada rises in Amarkantak hills, so it does not rise from the Brahmgiri ranges. The second is Krishna. Krishna rises from a spring near Mahabaleshwar, around 1400 kilometers का path ये follow करके Bay of Bengal में मिल जाती है. तो Krishna is also not. The Periyar. Periyar is an important river which is a west flowing river. ये बहुत important river है केरला की. So it does not rise in the Brahmgiri ranges. So answer here is the Kaveri. Kaveri rises from Brahmgiri ranges and then flow towards Bay of Bengal. Now let's move to the eighth question. Which of the following is west flowing river? Now west flowing rivers बहुत ज़्यादा important है because ये हम क्लासीफाई करते हैं ड्रेनेज के हिसाब से कि कौन सी रिवर कहाँ फ्लो होती है. तो दो ड्रेनेज सिस्टम है. वन इज ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो कि सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है. द अदर्स आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर, दे ड्रेन इनटू अरेबियन सी. सो नदर्न साइड से अगर बात करें तो इंडस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अरेबियन सी में जाती है. उसके बाद साबरमती. तो साबरमती आश्रम कहाँ पर है? गुजरात में. तो गुजरात में मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ रिवर्स किस तरफ को फ्लो करेगी? वेस्ट की तरफ. तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट. The other is Mahi. Mahi is also west flowing river. The other two are Bharathpuzha. Bharathpuzha is what? केरला की सबसे important river या सबसे largest river. तो केरला में जितनी भी majority river निकलती है वो सारी की सारी किधर जाती है? Arabian Sea की तरफ, which is the west flowing river. So this is also right. Now Periyar. Periyar we have already discussed. ये second largest river है कहाँ की? केरला की. So it is also a west flowing. So all of these are west flowing river. The answer is all of the above. Let us move further. Which of the following is the longest river of peninsular India? So we have already discussed this. आपको याद रखना होगा peninsular India. What is a peninsula? Peninsula is a land which is surrounded by water from three sides. तो इंडिया का जो southern portion है उसको हम बोलते हैं peninsular India.
तो इसमें आंसर क्या होगा? नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी। सो अगर आप ऐसे याद करने की कोशिश करें, नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक हिल्स, ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली में। रिफ्ट वैली किसके बीच है? सतपुड़ा और विंध्यन रेंजेस के बीच। द सेकंड इज गोदावरी। यस, गोदावरी इज द आंसर। गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट river of peninsular India. It is also known as Dakshin Ganga. Krishna and Mahanadi are other rivers which rises in peninsular India and they flow towards what? Bay of Bengal. Godavari is the answer here. उसके बाद last question for today is which of the following rivers flow through a rift valley? Now we have already talked about a rift valley. Now if you look at the map, India का जो map है, physical map में आप अरावली रेंजेस को देखेंगे, उसके बिल्कुल साउथ ईस्ट वाली पोर्शन में आपको विंध्यन रेंज मिलेगी, उसके बाद आपको मिलेगी सतपुरा रेंजेस। तो यू सी सतपुरा रेंजेस और विंध्यन रेंजेस के बीच का जो पोर्शन है, इट इज नोन एज द रिफ्ट वैली। तो इस जो रिफ्ट वैली में कौन सी नदी फ्लो करती है? वन इंपॉर्टेंट रिवर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इज the Narmada basin का important part is formed by this rift valley. The other important river is which flows parallel to Narmada and drain into Arabian Sea is what? Mahanadi is not because it flows through Odisha. तो उड़ीसा का सवाल ही पैदा नहीं होता किस साइड आएगी। कृष्णा हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, महाबलेश्वर से निकलती है एक स्प्रिंग से, उसके बाद 1400 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस तय करती है और बे ऑफ बंगाल में जाके सबमर्ज हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? घाट प्रभा, मूसी, भीमा, तुंगभद्रा, ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है। तो तुंगभद्रा हमने ये भी डिस्कस कर दिया बिकॉज इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। सो एक ही आंसर बचता है, आंसर इज तापी। So this is all from MCQs. This is the answer here, Tapi. If you want me to continue these lectures, if you want me to continue these MCQs, so I would like you to comment and mention below the topic and the chapter कि किस बारे में आप चाहते हो MCQs. And if you find this video useful, please subscribe and share with your friends. Thank you.